और हमने आज के सेशन में रखा था कि बेसिकली वी आर गोइंग टू cover the whole chapter of real numbers, or along with that we will be covering the MCQ part as well. So I hope सबसे पहले hello, अस्सलाम वालेकुम from technical issues, JK09 writer, hi, Kamran Ali, good job sir, Rafiq Pawana saying hi, अस्सलाम वालेकुम, and Musab Mir saying hi sir, hi, and Hazim saying hi sir, Musab, each and everyone, थैंक यू। और आज के सेशन में स्पेशली हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स के ऊपर, एंड आई होप ईच एंड एवरीवन ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन में आ चुका होगा। सो सबसे पहले पूरी एक्सरसाइजेस हम सॉल्व करेंगे इसकी, ठीक है, और साथ साथ में आप एग्जाम तक सब हो जाएगा। शरीफ बच्चा इज सेइंग दैट ओके, आई होप कि एग्जाम तक हो जाना चाहिए, क्योंकि हर दिन हम एक लाइव शाम को 10 बजे करेंगे और इट्स एवरी टाइम। ओएस मनी सिंह अस्सलाम वालेकुम सर, हिदायत सिंह नाइट स्टडी है सर। हाँ, कुछ तो मजबूरियां हैं ना, तो यू हैव टू ना गो विद दैट। सो आई होप वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम। लियो शेख सर, यू आर माय इंस्पिरेशन एंड लव यू, थैंक यू फॉर योर लव एंड शेयरिंग एंड केयर एज वेल। सो आपका साथ चाहिए एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। So चलिए, let's get started with today's important topic, and that is real numbers. And real numbers के सबसे पहले जो पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, that's basically MCQ. So first thing is that what are the real numbers? सबसे important चीज, ठीक है, what is going to be a real number, ठीक है। तो let's check again one thing. There is pen needs to be corrected. Okay, I hope yes, it's working fine. Okay. So चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का ये सेशन। बहुत ही सिंपल सा सेशन है। सो आई एम गोइंग फर्स्ट विद द एमसीक्यू पार्ट, एंड बहुत सारे एमसीक्यूज इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव विद द एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड ईच एंड एवरीवन। सो आई होप कि मेरी आवाज सबको आ रही है। ओके, यस, आई हैव नॉट अपलोडेड देम। हमने सिर्फ लीनियर इक्वेशन तक मैथ्स पढ़ाया था, उसके बाद नहीं पढ़ाया। सो अभी बाकी चीज़ें जो है आपको आने वाले 10 दिनों में हम कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आप लाइव सेशंस ज्वाइन करें और यू कैन आस्क योर क्वेश्चन कि एक्सट्रैक्ट कैसे करें। ओके, सो विल आंसर यू इन डाउट सेशन, बट टुडे इज रियल नंबर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first question here on your screen is, and I hope you will be answering it in the chat box as well. So the number 2 is the composite number, odd number, prime number, and none of these. What should be the possible options are? Come on, fast. Sir, आवाज आ रही है. Thank you, Hidayat. That's amazing. So please tell me to some extent. Sir, where are you from? I'm from Srinagar, and that's amazing. Okay. So the number 2 is, who is coming with the answer? Okay, the number 2 is a prime number, odd number, composite number. So बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं. माजिद फयाज, दानिश, हिदायत, prime from Rafiq Pawana as well, Buruj and Musab, each and everyone, that's amazing. So yes, prime number is going to be the correct option here. So I'm clicking it on as well. So आपका जो prime number है, that's going to be the right one. So quickly move with the next part, and that is the one here. Polynomial of degree 3 is called as. What is the polynomial of degree 3 is called? Is it right? The question is from polynomial, so not a problem. You can answer this one. So polynomial of degree 3 is called as. Okay, that's amazing. Cubic coming answer from most of you, and that's especially great. So इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो रही है, एंड दैट्स गुड. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें मैं और आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, कि अगर आपके पास पोलिनोमियल विद डिग्री 2 है, दैट्स बेसिकली कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, quadratic polynomial, and if it's degree 1 and then it's called as linear polynomial, तो ये भी पूछा जा सकता है. अगर डिग्री 4 है तो इट्स कॉल्ड एज क्वार्टिक पोलिनोमियल, और दूसरा नाम इसका है बाई क्वाड्रेटिक. ठीक है,
तो आप ये भी बता सकते हैं, इट्स गोना बी बाई क्वाड्रेटिक एज वेल. So let's move again here, and this is the one. The number 3 is the composite number, even number, prime number, are none of these. So मुसैब मीर सिंह, सर व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा वन. वन द यूनिवर्सल फैक्टर अगेन, एंड अगर हम बात करें तो नंबर इटसेल्फ और वन, यानी कि अगर आप थ्री के फैक्टर्स की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द फैक्टर्स ऑफ थ्री, इज इट राइट? अगर हम फैक्टर्स की बात करें थ्री की, थ्री हैज द फैक्टर्स लाइक 1 and 3, so it's called as the prime number. कंपोजिट इसका अपोजिट होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. और रियल नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है, अगर आपसे जब भी कोई पूछे ना व्हाट आर रियल नंबर्स, देखिए आपके सारे नंबर्स रियल हैं, इज इट राइट? जहां तक हमने अभी तक जो नंबर्स पढ़े हैं, चाहे आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे आप रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, चाहे आप इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ऑल दीज आर रियल नंबर्स. और रियल नंबर की सिंपल डेफिनेशन है the numbers which we can plot on a number line, so they are exactly called as the real numbers. तो ये एक बहुत simple definition है, and this is the one. So again बहुत सारे आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, so that's amazingly great. Thank you for your quick response. And yes, यहाँ पे the number 3 is basically a prime number. So let's move ahead and let's talk about one more question, and here is the one. The H.C.F of 135 and 225 is 135 and 225. Okay, so I hope you can do this. This is pretty simple and easier. H.C.F of 135 and 22. Later on, ये already हम going to solve this in the exercise part as well. But यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि what should be the H.C.F for the same. Highest common factor. Highest common factor here. What should be the answer? So I can see most of the people answering, and that's great. Prime numbers only two factors, बिल्कुल सही, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर एंड व्हाट आर को-प्राइम? को-प्राइम नंबर्स आर एग्जैक्टली द नंबर्स जिनके पास जिनका सिर्फ एक वन कॉमन फैक्टर हो, ओनली वन. So 45 from Bilal Untu. What are co-prime numbers? I just explained the same. 45 sir, C. 45 from Danish, Rafiq. Insha is also answering. Magre Faizan is also answering. That's amazing. Musab Mir, what are the co-prime numbers? मैंने अभी आपको बताया ना, co-prime number होता है जिसका सिर्फ एक common factor हो. One as only the common factor. Like 5 and 3 are also co-prime. Is it right? So let's move again, and H.C.F of here. अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. The reason behind this is already in the exercise part, तो वहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा. तो exact answer here is 45. So let's talk about one more, and here is the one. H.C.F of 26 and 91. Highest common factor of 26 and 91. These all questions are already asked in the examination. Last year के पेपर से हमने लिए हैं, कोई खुद से नहीं बनाए हैं, तो you must be caring about the same. So now amazingly great. बहुत सारे लोग हिदायत saying 46. It's not 46, I think. For the previous question, if you are answering. Okay, that's amazingly great. Sharif Bacha, you have given the answer as well, sir. D. None of these. Okay. So it's pretty simpler and easier one. I hope you can solve this one out. क्योंकि ऑलरेडी हमारी एक्सरसाइज में है, तो वहां पे मैं ये वैसे भी सॉल्व करने वाला हूं, एंड आई होप यू कैन फाइंड इट देयर एज वेल. सो यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल सॉल्व इन द एक्सरसाइज पार्ट. फिलहाल हम MCQs डिस्कस कर रहे हैं. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग द इक्लूड डिवीजन लेमा. सो 26 and 91, and you are being asked about the highest common factor. Okay, so the correct answer is, as I'm observing, most of you are actually giving the answer. Answer A is going to be 13, but here 13 is not available, so none of these is the right option here. So बहुत amazing, बहुत सारे लोगों ने बहुत सही आंसर और करेक्ट आंसर दिया है. That's amazing. So let's move apart from this, and let's discuss another part. And here is the one, next one for you all, and this is the one. The H.C.F of 6 and 20 is, what is the highest common factor of 6 and 20? So again, long division method, but yes, I'm not going to elaborate it like this.
6 into 20. Again, अगर यहाँ पे आप देखोगे 6 3s are exactly coming out to be 18, so you got 2. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, if I'm again using it, remainder is not equal to 0, so आपका 2 3s are 6 हो जाएगा. Now you got your H.C.F. When your remainder becomes exactly 0, whatever the H.C.F is exactly called as the highest common factor of the two numbers. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, most of the people are giving the answers. Thank you each and everyone for your support. Akash, Hazim, Mubashir, Hadu, Hania, Dast, and this is Shazia, Chess K King, Mubashir, Vani Sobia, Magri Faizan, Danish, Hadu, Hidayat, Baruj, and again, most of the people are answering here. So let's move with the next part, and this is the one, a pretty simple one this time. The number 1.732 is an integer, an irrational number, a rational number, or an irrational. So क्या हो सकता है 1.732? 1.732 is the number. So what is it? See, an irrational number, most of the people are with that. So I hope 13 was not there. Is it right? 13 was not there. 26 and 91. Is it right now? Option should be, here is the H.C.F. H.C.F is exactly a prime number, but it is asking about the number. Is it right now? यहाँ पे number हमारे पास नहीं है. So that is the reason. Okay, let's talk about one more. This is the one, B part. Most are saying it's a rational number. So सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज में भी वैसे डिस्कस होगा. The question is very important. सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, it's pretty simpler and easier. 1.732. अगर ये डेसिमल को मैं कन्वर्ट करता हूँ एक रेशनल नंबर में, so it will be 1732 divided by 1000. Is it right? ये हमारे पास 1000 हो गया. Can we write 1000 in the powers of 2 and 5? Is it possible to write the 1000 in the powers of 2 and 5? So ये हमें चेक करना होगा, and we have to check the prime factorization for the same as well. Is it right? So यहाँ पे 2 into 500, then again 2 exactly 220, 250s are, and then moving with 2 1s are, 2 2s are, and then again 2 5s are 10. So this is going to be like 5 25s are, and then is exactly going to be 5 5s are. So you have 2 cube and then 5 cube. So exactly denominator, यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं denominator की, तो denominator we can express denominator in the form of 2 raised to power 3. So this is 2 raised to power 3 and 2 raised to power 5. So this is going to be exactly rational number. क्योंकि रैशनल नंबर की अगर हमारे पास डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होती है, ठीक है, या वो रिपीट होती है, इज इट राइट नाउ, उसके लिए कंडीशन है कि आपके डिनोमिनेटर के पावर या तो 2 रेज़्ड टू पावर 5 की फॉर्म में हो, या तो 2 और 5 की पावर्स में. दैट्स एग्जैक्टली अ थ्योरम हियर. 2 रेज़्ड टू पावर m और वी हैव 5 रेज़्ड टू पावर n की फॉर्म में. दिस फॉर्म शुड बी द डिनोमिनेटर, एंड वी आर गेटिंग द डिनोमिनेटर इन द सेम फॉर्म. सो दैट्स इट. इज इट राइट? सो we're understanding easily. So it's a rational number, so this is going to be the answer here. So now let's talk about one more, and that is the one here for you all. So pi is, yes, important one, an integer, a rational number, an irrational number, or none of these. Yes. What is the value of pi? So yes, I hope you can understand this. What is the value of pi, and what is pi basically? Integer है, rational number है. Okay, most of the people are asking, sir, it's B, it's coming C, rational, irrational, irrational, irrational. Okay. So अगर हम पाई की बात करें तो पाई इज बेसिकली एन फेमस रैशनल नंबर, बहुत मशहूर रैशनल नंबर है, एंड द आंसर इज एग्जैक्टली सी. और अगर इसकी आप डिसिमल एक्सपेंशन की तरफ भी जाएंगे ना, तो डिसिमल एक्सपेंशन जो इसकी है वो नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज द वन. सो लेट्स टॉक अबाउट वन मोर हियर.
pi square is exactly equal to 0.5, then pi is, if pi square is 0.4, if pi is 0.4, then what should be the answer? Rational number are this. Okay, what should be the answer? This question was actually asked in 2018. 2018 में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था. So let's check who is coming with the answer. If it's given that कि अगर आपका pi square is exactly equal to 0.4, then pi is, what is the value of pi then? Okay. So this is basically both the pi and both are non-terminating. अगर multiply करिए हम, ठीक है, it will be non-terminating as well. Is it right now? So answer आपका irrational number हो जाएगा. So this is again going to be an irrational number as well. Okay, that's it. Now moving on forward here. Moving on forward, let's talk about one another question, and this is the one. 1 to 1. Square root of 1 to 1 is an even number, and rational number, and rational number are none of these. So a pretty simple, root 1 to 1 perfect square है, तो आंसर जो है आपका वो रेशनल नंबर आएगा. इज इट राइट? सो क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट काटेंगे तो इट विल बी 1 अगेन 11. सो 11 इज बेसिकली अ रेशनल नंबर. सो द आंसर इज रेशनल नंबर. मूविंग ऑन अहेड हियर, वन मोर क्वेश्चन. 1 इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. बहुत सारे लोग इसे समझते हैं. कंपोजिट नंबर एंड इवन नंबर, प्राइम नंबर आर नन ऑफ दिस. 1 इज, अगर हम 1 की डेफिनेशन देखें ना, प्राइम नंबर की तो 2 फैक्टर होने चाहिए, इसका तो एक ही फैक्टर है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में भी नहीं आता है. उसके बाद अगर हम कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है. एंड इवन नंबर इट्स नॉट पॉसिबल. सो नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन हियर, एंड आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. सो नन ऑफ दीज जो है हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है इस केस में. So let's talk about question number 11 we are done with, and that's 12. LCM of 12, 15 and 21 is, LCM of 12, 15 and 21. What is the LCM of 21? That's amazing. For the last question, each and everyone's answer was correct. अब बात करो इस question number 12. Is it right? If it's possible, you can write the question number here, that it will be like very easier for me to get it. Okay, Fayaz, you are asking it 420, B 420. Most of the people asking 420. Let's come back. Full task, Akashvani again. So always अपने जो भी आपके गूगल अकाउंट्स होते हैं ना, उनके नाम अच्छे से रखो ताकि नाम लेने में आसानी हो. वानी सोबिया, हाजिम and 240. Some are asking 420 and yes. Okay, let's see. That's amazing. Tawkir Ratha, that's amazingly great. So B, Sahil Lon is asking, sir, it's B. Okay. Next. So most of the people are exactly with the B. This is your question number exactly 12-1. So the B is the correct answer, 420. If you just go with finding out the LCM, so you can find it out. Later part, ये हमारे already exercise के part में है, so we will solve it there as well. So now moving on with the next, again a question from LCM part. LCM of 26 and 91. ये question हमारे पास है already exercise में. So again LCM of this. Okay, that's coming. बहुत सारे answers आ रहे. Okay, B 128 for the same. Bruj saying sir it's B. Wasim Sheikh saying sir it's B. Okay. 26 and 91 का आपको LCM find out करना है. Is it right? So that's pretty simpler. Okay. So if you go with the correct answer is exactly C part, that's 182. Is it right? So later in the part मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा जो हमारी एक्सरसाइज में नहीं है. So don't get scared कि हमें ये नहीं आता या ये सारी चीजें नहीं है. So let's move with another part, and here is the one more. LCM of 6, 72 and 120. Again
प्राइम फैक्टराइजेशन, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन भी अगर आप करेंगे ना तो उससे भी आपको जो है आंसर बहुत आसानी से जो है वो आ जाएगा. इज इट राइट नाउ? जस्ट लाइक दैट. 6 और सेकंड नंबर इज आपका 72 एंड देन 120. जस्ट डू द सिंपल एलसीएम मेथड. इज इट राइट नाउ? 2 से सारे हो रहे हैं. So even it's going with 2 3s are 6, then again 2 36s are like that, and then 2 60s are. So इस तरह से आप करते जाएं and you will get the answer. So let's see who is coming with the answer. Okay, Baruch, we will do it, sir. सर सेट टाइम अप इन द नेक्स्ट वाले वीडियो में डेफिनेटली हम टाइमर लगा के रखेंगे ताकि आपको आसानी हो. सो यू विल एंजॉय इट एज वेल. ठीक है. सो दैट विल डेफिनेटली बी ना easier फॉर अस टू अंडरस्टैंड एज वेल. सो सी बाय सॉल्विंग देम. यस, हाँ, दिस वुड बी है ना. एग्जैक्टली बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, है ना. दैट्स ग्रेट. सो दैट्स योर, अगेन बहुत सिंपल है. Are waiting for answer. Most of the people are saying, sir, it's B, 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 B. And let's see. If you do the LCM, lowest common multiplier, then again, मैंने आपको कहा था कि आप फिर से you can just drop it and go with like keep 3 as it is, then go to 18s or to 30s or, is it right? And then again, move with the same part, keep 3 as it is, 2 9s are 18, 2 15s are, and then go with 3 part. Is it right? So again 3, 3 1s are, 3 3s are, and then 3 5s are 15. Now 3 5s are 15, and 15 into 3, that's 45. 2s are 90. Is it right now? So 90 into 4, 9 4s are 360. So the correct answer is exactly going to be the A part here. So A part जो है आपका सही आंसर है. And Sameer, Hidayat, and most of the people, Rafiq Parwana, so आपका आंसर भी गलत है. Answer is exactly gonna be A. So let's talk about one more. This is already in the exercise part as well. So 867 and 225. What should be the answer for this? And I hope you can answer it very fast, क्योंकि ये तो पहला क्वेश्चन है आपके मैथ्स का. So you can get it very fast. Okay, let's see who is coming up with the answer. That's your question number 15 as well. 20 questions and then we will move with the exercise part. So let's talk. Okay, sir, 360 it is. Yes, B is coming 51 from Shafiq, Shazia, and yes, again full task with B. Sahil loan, so B. Okay, so it's exactly बी पार्ट 51 जो आपका एग्जैक्ट आंसर है. यू कैन डू द एक्लूड डिवीजन लीमा, और लास्ट पे आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बचेगा वो 51 है. आई विल डेफिनेटली शो यू this exactly in the answer part as well. Is it right? So this is how the things are going on. So this is a pretty simpler one thing. So now moving on forward here. So the next one, this is the one. Yes, just a second. The H.C.F of 870 and 225 is highest common factor of 870 and 225 is H.C.F of 870 and 225. 870 and 225. ओके, आई एम जस्ट लुकिंग. इसके लिए बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था लास्ट क्वेश्चन के लिए. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन नाउ. हाईएस्ट कॉमन ऑफ फैक्टर ऑफ 870 and 225 now. 16. Question number 16, that's part A, is going to be the correct answer. So moving quickly with some more questions, and then we will start with the exercise part. The prime factorization of 48. So बहुत simple है. Prime factorization of 48 is to be asked. जो 48 है हमारे पास उसकी prime factorization पूछी गई है. So 48, I'm just doing it fast. 2 2s are 2 4s are 8, and then 2 12s are, and then 2 6s are 12, 2 3s are 6, and then 3. So 2 4 times is there and 3 1 time. Is it right?
4 टाइम हमारे पास 4 होना चाहिए. दिस इज बेसिकली द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हियर द पार्ट बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. ठीक है, तो आपका जो पार्ट बी है दैट्स गोइंग टू बी द करेक्ट इन दिस केस. Now, okay, amazingly great. Akash, Strary, Majid, and then Bruch again. So, Vani Sobia, Star, Status Master, Wajid, Hazim, and again, Bruch sir, answer is B. B part is going to be the correct answer there. So, now let's talk about if a and b are any two positive integer, then HCF of a into b into LCM of a into b is equal to product of two numbers and HCF into LCM. Is it right? So कौन सा इसमें आंसर आएगा आपके पास? This is a pretty simple one. I hope सबको मालूम है product of two numbers is exactly equal to HCF into LCM. Same here is going to be used. HCF of a into b into LCM of a into b is exactly going to be, okay, it's Wajid, 00 Wajid. Now Majid is also there, is it right? So Majid भी है हमारे पास. So yes, HCF क्या होगा अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या होगा, is exactly equal to the product of two numbers, so it's going to be the product of two numbers. Part C, question number 18 is part C. So let's move with the next part, and that is your question number 19. The decimal expansion of 22 by 7 is terminating, non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating 22 by 7 जो है, non-terminating and repeating इसका जो है non-repeating already पाई का वैल्यू 22 by 7 होता है. So part C is going to be the correct answer for the same. Is it right now? So this is going to be the part C. Now the last but not the least one, and here is the one. For some integer n, the odd integer is represented in the form of. अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है तो ऑड इंटीजर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? n, n plus 1, 2n plus 1, is it right? और then 2n. ऑड इंटीजर आपको बताना है, तो आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे. So Amir Zuhaib, sir, answer is fifth one, but there is no fifth part in the answer. IIT aspirants 2026, so it's C. Rafiq Pavana saying it's B. Again wrong. So Hazim, so it's going to be n plus 1, sir. No, अगर हम मान के n plus 1 की एक एग्जांपल में लेता हूं, ठीक है, अगर मान के चलो मैं 1 plus 1 की एग्जांपल लेता हूं, n मेरा 1 है and I'm adding it 1, so what will be the answer? It's an even number. ठीक है, तो इनका हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, where n can be any value, is it right? तो आपका जो 2n plus 1 है ना, ये आपको odd number देगा, so that's the answer, correct one. So this was the MCQs, the important MCQ I hope from this number. और यहाँ पे एक क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है वहां पे आप चाहे तो यू कैन गो विद, जिसमें मैंने आपको बताया था 13 आंसर आ रहा था. ठीक है, तो 13 में आप अगर प्राइम नंबर भी लगाना चाहें तो यू एज वेल. इज इट राइट नाउ? सो प्राइम नंबर भी आप यूज कर सकते हैं, बट 13 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. तो वहां दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, बट प्राइम नंबर इज मोस्ट करेक्ट. मोस्ट ऑफ द पीपल वर आस्किंग द सेम, सो प्राइम नंबर आप लगा सकते हैं. So now let's talk about the exercise part, and I hope now you will